नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मुख्यतः हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट पॉलिसी चेंजेस दैट ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी मेड फ्रॉम 1757 to 1813 to further its economic and commercial interests in India. Between this period, there were seven administrators sent to India. Initially, these administrators were called governors, and later on, that post was made Governor General. And under that post, there were also the areas of Mumbai and Madras that were included. The seat of Governor General was in Calcutta at that time. The prominent of these governor or governor generals were Robert Clive, Warren Hastings, Lord Cornwallis, and Lord Wellesley. And to understand that how these economic, administrative, political policies shaped up, and also legal policies shaped up, we have to understand that in the beginning, East India Company had no interest uh, in administration and making any type of political interventions or gains in India, right? However, there was a political vacuum in India at that time. It wasn't because there were no individual powerful rulers, but all Indian rulers lacked some kind of holistic understanding and had those weaknesses that ultimately East India companies exploited. For example, like all Indian states failed to understand the true nature of East India Company. वो समझ ही नहीं पाए कि ये लोग हथियार विक्रेता, दे आर नॉट जस्ट द सेलर्स ऑफ आर्म बट दे हैव larger economic interest, and in it is because of that economic interest that they were supplying the or becoming the weapon suppliers. um, at the same time, when the true nature of the company became clearer, uh, a lot of them saw it only in military context. Only a few rulers like Tipu Sultan and Nana Fadnavis, they saw both the military and economic angle, but even they were very unsuccessful in. So in case of Tipu Sultan, he was unsuccessful because he could not develop the modern scientific education that could have ultimately led to greater awareness. And in case of Nana Fadnavis, he couldn't bring all the other ruler together to fight against the East India Company. Right. So at different levels, there were these weaknesses that ultimately East India company exploited. You also have to understand that it was a tussle, a fight between capitalistic approach that East India Company took because they were constantly focused on profits. As I said, they were very well managed in terms of having a board of governors, having shareholders who were also part of British Parliament at that time. So they had all that guidance coming from Britain in terms of managing and administration of that company. एंड ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स थे वो काफी फ्यूडलिस्टिक स्ट्रक्चर्स थे, है ना? और उस फ्यूडल सेटअप में इट बिकेम इजियर फॉर लाइक अ वेल managed and well guided company like East India Company to put it in its interest ahead and make these gains that we saw in the past few episodes. Um, फाइनली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी रूलर को लार्जर लाइक दे ग्रोसली लैक द अवेयरनेस ऑफ लार्जर इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बिगिनिंग टू स्प्रेड इट्स operation in India. And when I say larger international context, it meant that if you see the Europe at that time, these powers were constantly at conflict with each other, and especially the decade of 1770, where the British lost the American colonies because of American War of Independence and were kind of weak, right? And that's why, like, if you see, उन्होंने मराठास के साथ जो एक 20 year पीस जिसे कहते हैं, वो पीस नहीं था, बट इट वाज जस्ट लाइक ब्रिटिश अंडरस्टूड दैट देयर इज नो
there is no gain to be made by going into a conflict with Marathas at this point, and they just waited. They just bided their time for those 20 years, and this wasn't clear to a lot of Indian rulers. अगर होता तो शायद we would have like they would have understood that the company is weak at this point, and they would have maybe like the course might have been different. अब समझते हैं कि तो अब क्या है कि जब ब्रिटिश कंपनी इज ओनली फोकस्ड ऑन जब इकोनॉमिक गेन, सो द पॉलिटिकल पॉलिसी वाज आल्सो focused mainly on two major clauses that would lead to these economic gains, and that would lead to less amount of money being spent in in wars and stuff like that. So the पहला एक जो important tenet था वो कि avoid wars and dissolution, right? Like in the Indian part, as far as possible, and only do it out of commercial interest. If commercial interest guides a war or guides a dissolution of a state, like bringing or integrating two states together, then do it. Otherwise, don't. Second था encircle enemy states with friendly state. राइट, सो जो कोई भी एनिमी है उसके आसपास अपने फ्रेंड्स को रख दो ताकि उन पे एक दबाव बना रहे, उन पे एक प्रेशर बना रहे, एंड दे डू ईस्ट इंडिया कंपनीज बिडिंग. And finally, the subsidiary treaty, right? Like subsidiary treaty एक बहुत ही important aspect था जो British brought in, and sometimes it is felt कि subsidiary treaty तो सिर्फ वो एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद, like 1793 के बाद आई. In like subsidiary treaty actually came in 17, but if you look, the treaty of Allahabad that was signed after battle of Buxar had that same nature, where you would put that king on some kind of pension, where someone would sit in their darbar, like a resident would be sitting in their darbar, where their external affair policy would be completely in hands of East India Company. So that had some element of subsidiary treaty, but ultimately, subsidiary treaty, which came after 1793, became an important part of political policy of British and East India Company. Now, at the same time, we have to remember that there was a board of control in London, and every year East India Company was supposed to pay 400,000 pounds to British government, right? And they paid it because they wanted to have a monopoly in India, and we saw that in first episode, like King James first, he gave them this monopoly for lifetime. And put some clauses in terms of payment, and if they default on payment, then the monopoly would be broken. ऐसा ये सब clause पहले रखा गया था, और इस कारण से करीब इतना पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी, 4 लाख पाउंड्स, 400,000 पाउंड्स, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती थी. And about 25% of the members of British Parliament were also shareholders in the company. तो आप समझ सकते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं था, बहुत ही क्लोज कंट्रोल था. और हम इस एपिसोड में देखेंगे भी कि कैसे इस क्लोज कंट्रोल के कारण कुछ आगे चल के चेंजेस होंगे. Now, to understand the administrative policy in this time, we have to little bit understand the administrative structure during Mughal times. Now, मुगलों के जमाने में सूबेदार और दीवान, ये दो अलग अलग लोग होते थे. मतलब सूबेदारी और दीवानी, इन दोनों को अलग रखा जाता था. सूबेदारी वॉज मोर कंसर्न विद द मिलिट्री एस्पेक्ट, दीवानी वॉज मोर कंसर्न विद द रेवेन्यू एस्पेक्ट. और जो क्रिमिनल जस्टिस होता था वो सूबेदारी के अंडर होता था, उसको फौजदारी न्याय कहते थे. एंड द सिविल जस्टिस वॉज अंडर द दीवानी. नाउ, as I said, that British never wanted any part of the administrative duties in the initial days. So जब रॉबर्ट क्लाइव आए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, ही ब्रॉट अ डायरकी, जिसे कहते हैं द्वैध शासन. और द्वैध शासन का क्या एस्पेक्ट था, दैट ही टुक over the Diwani, he took over the revenue system, and he let the administration be controlled by the नवाब. एंड उसके लिए एक अलग से पद क्रिएट करा गया जिसे उप नवाब कहा गया.
ठीक है। अब देखिए इसके कारण क्या हुआ, अगर रेवेन्यू आप अपने हाथ में ले रहे हो और जब एडमिनिस्ट्रेशन आपने किसी और को दे दिया, और किसी और को देने के भी कुछ कारण थे, है ना। द रीजन व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट टेक एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स हैंड, हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, वाज वन, बिकॉज वन दे डेफिनेटली लैक कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हु कुड बी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. The second was that becoming direct administrator at that time, in between that 1765 to 1772, would have attracted bad attention for the company from the other rulers, and it could have alerted the Indian rulers, and that's why the company never wanted to take the administration in its hands. But hota kya hai, because now administration was in the hands of Nawab and Indian officers supervised by British officers or British supervisors, there started a huge amount of corruption. बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया. ये सारे ऑफिसर्स एक दूसरे को पैसे खिलाने लग गए, और उस कारण से क्या होने लग गया, ग्रेन का होल्डिंग होने लग गया. बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर स्टार्टेड होल्डिंग ग्रेन सो दैट दे कुड सेल इट ऑफ at higher prices. The other part was that because the revenue collection had to be the focus, the revenue, that the land revenue tax was increased to 40%, which practically decimated the purchasing power of the farmers in Bengal. And on top of it, um, because of the personal trade, these pressures increased on the artisans, and many artisans in this process were ruined. To make the matters worse, in 1768 and 1769, rains defaulted in Bengal, and that resulted into a grave famine in Bengal. भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण कहते हैं 1/3 of the population of Bengal was destroyed. इसका एक बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही मार्मिक डिस्क्रिप्शन आनंद मठ में दिया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है. और अब इस फैमाइन के कारण क्या हुआ, आप देखिए इस फैमाइन के कारण एक तो ये समझ में आया कि ये द्वैध शासन प्रणाली जो डायरकी है, दिस इज नॉट वर्किंग. ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली अंडरस्टूड दैट, एंड this also attracted attention of British Parliament, because they saw that एक तरफ तो फैमाइन पड़ा हुआ है जिसके कारण कंपनी के रेवेन्यूज अफेक्ट हो रहे हैं और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेमेंट्स में डिफॉल्ट कर रही है, पर कंपनी के ऑफिसर्स तो रिच होते जा रहे हैं, है ना. तो ये चीज जब वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आना शुरू हुई, सो देन देयर वाज अप्रोर एंड देयर वाज pressure created by influential classes in Britain to put some control, put some regulation on the company. There were also supporters of free trade in Britain who started standing against the East India Company's monopoly in India. And there were also situations where, because of the richness accumulated in India, people started buying seats in parliament, क्योंकि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होने से और पावर आती है. तो वहां पे जब ये पता चला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि इसके कारण अब ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उन्होंने फिर दे ब्रॉट इन द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. इट वाज पास्ड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट intervened in the administration of East India Company's empire in India. Early So now from here on, every year, East India Company had to present the details of military and fiscal status to the parliament. Also, the number of directors were increased from 18 to 24, and the governor general uh, सीट एट दिस टाइम was created. तो आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव और वलस्टाड और कार्टियर, ये जो पहले तीन लोग थे एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये गवर्नर कहलाते थे. बाद में जब वॉरेन हेस्टिंग्स आए, उन्हें गवर्नर जनरल का पद दिया गया, और इनका ऑफ जो मेन था, ये कैलकाटा में बैठते थे, और बॉम्बे एंड मद्रास वर पुट अंडर हिज सुपरविजन. At the same time, Supreme Court was established in Calcutta as a part of regulating act.
and a member parliamentary council was created, of which Governor General was a part and had the veto powers in case there were disputes within the council. So this act was fine, and although this act did not, eliminate everything, all the problems that diarchy had created, but it started establishing some kind of control, like direct control of British Parliament over East India Company's operation in India. Now going back to 1772, तो obviously डायरकी को एंड किया गया, और जब फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आए तो उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली, है ना, एकदम ओपनली रेवेन्यू सिस्टम और लीगल सिस्टम को अलग करने का स्ट्रैटेजी बनाया. सो नाउ द पॉलिसी चेंज, एंड अंडर द रेवेन्यू सिस्टम चेंजेस, हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड अ फार्मिंग मेथड. और फार्मिंग मेथड का क्या मतलब था कि जो हाईएस्ट बिडर होगा, he would get the rights to collect the revenues. Zamindar were specifically kept aside, and right to collect revenue were given on the 5-year basis to the highest bidder. But आप खुद सोचिए, अब every year the revenue changed, and because the revenue changed, it affected the budgeting and investment of East India Company. So it actually became a headache, and therefore first the 5-year farming system was reduced to 1 year, and as I said, like it was still an administrative hassle, so it was ultimately ended. So जो revenue collection वाला system था वो अभी भी वैसा ही रहा. I think जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हेस्टिंग्स ने किया, उन्होंने टैक्स कलेक्शन जो था, ट्रेड पे जो टैक्स लगता था, चुंगी कहते हैं जिसे, वो थोड़ा जमींदारों से अलग ले लिया, क्योंकि पहले चुंगी भी जमींदार ही वसूल करते थे, और उसको अलग करके 5 जगहों पे 5 places वर फिक्स्ड टू कलेक्ट टैक्सेस: मुर्शिदाबाद, पटना, कलकत्ता, हुगली और ढाका. यहां पर टैक्स कलेक्शन होता था, और टैक्स वाज फिक्स्ड एट 2.5%. हेस्टिंग्स का जो एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे फार्मिंग मेथड तो इतना कंट्रीब्यूशन रहा नहीं, उन्होंने कोशिश करी, पर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वो है लीगल सिस्टम में कंट्रीब्यूशन. और इसको समझने के लिए, जैसे मैंने कहा, जो दीवानी, मैंने क्या कहा था कि जो रेवेन्यू सिस्टम था, दीवानी was connected to also the legal system. वहां पे जो सिविल कोर्ट होता था वो दीवानी न्याय के अंतर्गत चलता था, और जो क्रिमिनल जस्टिस होता था वो फौजदारी न्याय, जो फौजदारी न्याय के अंदर चलता था. वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों को अलग अलग करके इनके सेपरेट कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दिए. और और एक्चुअली क्या था कि वॉरेन हेस्टिंग्स थोड़े से ओरिएंटलिस्टिक थे. ओरिएंटलिज्म मतलब कि इनको लगता था कि जैसे इंडिया में प्रथाएं हैं, रूल्स हैं, उसी के हिसाब से इसका लीगल सिस्टम भी चलना चाहिए, राइट. और ये मतलब ओरिएंटल सिस्टम इज स्लाइटली कॉन्डिसेंडिंग अप्रोच टू, लाइक टू रूल अ कॉलोनी. और यहाँ पर उन्होंने वही अप्रोच लगाई. हेस्टिंग्स का बिलीव था कि इसी अप्रोच से यहाँ पर काम चल सकता है. तो उन्होंने क्या करा, सिविल कोर्ट्स की स्थापना करी, and Hindu would have Hindu law, and Muslims would have Muslim law in these courts. And there were district civil courts under district collector, and then above the district courts was Upper Sadar Civil Court in Calcutta. It was set up in Calcutta. Similarly, for criminal cases, he set up criminal justice system, which was very, and he still kept the Muslim law for the criminal justice system, which was the old Mughal वे ऑफ अप्रोचिंग क्रिमिनल जस्टिस. और यहां पर क्या होता था, यहां पर भी डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट क्रिएट करे गए अंडर मुफ्तीज एंड काजी, और कलकत्ता में सदर निजामत अदालत क्रिएट की गई, वो भी जो चीफ मुफ्ती या चीफ काजी होते थे उनके अंतर्गत, उनके अंडर में रखी गई. Finally, Hastings also focused on the codification of rule of law in India. And he was, again, as I said, influenced by Orientalism. So what he did was that he got like Pandits and Ulemas to create legal codes to govern or to bring rule of law. And all of these legal codes would be aligned to Indian rituals. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि
कैसे पहले जो दो इन्फ्लुएंशियल गवर्नर और एक गवर्नर जनरल ने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, लीगल पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसी को अपनाया, एंड व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ ऑल ऑफ इट। नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे कि किस तरीके से आगे आने वाले गवर्नर, जैसे हेस्टिंग्स के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आएंगे, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या फर्दर बदलाव करे, क्या चेंजेस करे टू फर्दर एंश्योर कंपनीज इंटरेस्ट इन इंडिया। इस एपिसोड में जो एक important point I want all of you to remember is that it was 1773's Regulating Act which for the first time got British Parliament's interference in the governance of East India Company, and it was a direct interference, and from there we will see, like, it with every new act and with every new policy, the control of British government over India as a colony will increase in its influence. इस एपिसोड को आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और सुनने के लिए धन्यवाद। Until next episode, thank you.